I'm still working on it, sir. Okay, okay. It's not. It's not full responsibility. No, no, it does not need to be responsible and all. I just want to see how much you have worked on it. Your basic code and all. Nothing much needed. Okay. So just show it. I'm giving you guys one more day. Tomorrow, Lavanya is showing. Lakshmi, I will also be doing it. We will see about that. Shiv has not sent me anything, so I don't know about him currently. Okay. So till Muzammil displays, I will be. Let's just talk about the window object. Do you guys know what is the window object? No, sir. Okay. So I will be showing you the window object now. I hope my screen is visible. Yes, sir, it's visible. Okay. Uh, so let's go to any website now. Okay. So these are Google. Every website has its window object, and this is where you access it. So if I do console.log window, you see this is your window object. This is the very basic object of your document, and it is very big. And you can see that there are lots of. Let me zoom in. So there are many events over here. If you can see, it's visible, right? So we have access to local storage, location, and then your on app installed, on aux clicked, on drag. There are many things over here that we use. Like we have mouse events on mouse down, mouse enter, mouse leave, mouse move, mouse out, mouse over. So this is our window object, and we have this object over here. And inside this objects, we can do console.log window.document. So it uses this document object, and in this document object, you can see this is your head and all. But on a server side, if we see over here,
This is yesterday, so just let's just close it. Create a new global object. So if we go over here, this is your global object, and we just console log global. Let me just save this and let's zoom this also in. This is too much, I guess. This is visible now. Yes, sir. This is visible, right? I'm showing you guys. Yes, sir, it's visible. Okay, so we can go to node global.js. So if you can see inside this terminal, I have console log my global object. We are so limited to this in here, but in a browser window, we have our window object. It is far more usable. Who just joined? Is somebody else presenting? No, no. Okay. So this is our global object, and we will be working inside this object. So this object has this small things, and node comes with other things like also operating system objects. So if I console log this now, okay, we need to import it first. Const os equals to require os. So if I save this and log this out, you see I have so many things over here like arch, CPUs, amount of free memory, priority, load average, release. So these are all things required for your uh, server. This will give you data about your server. So if I now go ahead and do dot, so let's see what do we have. We have a CPUs object. So if I console log CPUs and type in here node, so you can see it lists out my CPUs. I have only one CPU, but my CPU has six threads. So this is CPU one, this is CPU two, CPU three, CPU four, CPU five, and CPU six. And there are others also like what do we have? We have host name. Sorry for that. Okay. Mm. So if I now console log my host name, uh, see you can see my laptop name over here. Like that, all we get. Okay, so let's start with the global object itself, which is by default. You don't need to import it or anything. And it gave us some functions like uh, you saw this. Okay, let's show you. I will do it again for you. So it gave us this global. It says clear interval, clear timeout, clear set interval, set timeout, micro task, immediate micro task, set immediate, and that's all. So we can either do global dot set timeout. So timeout is a function. It takes in parameters like 3000 and console log this. We will say this was after some time. Okay. So if I console log this, you see it displays it after some time. Now if I do this two over here and let's make it a bit small now. We don't need this terminal that much for now. So this is your console log 1. If I save it and run it, you see 1 and 2 ran first, and then we have this was after some time. So this is how you use set timeout. Then you have
clear timeout also, and then we have set interval too. So let's show you guys. Now for set interval, you can leave it running indefinitely with this. Okay, so we will just say wait a second. So we will say, okay, let's use gun for this time. This was fired from interval. Okay. So now, okay, we need to give it time also. So this will be 1,000 milliseconds. So this was fired from interval. You see, this was fired 3 times. Now it will be running indefinitely. So we need to stop it. We do that by pressing Control and C. As soon as I press Control C, it stops. What if we want to stop it after set time? So we assign it to a variable. So I can say interval equals to, so now this is your interval, and then we can just call it over here clear interval, and then the name of the variable we assigned it to. Okay. So now if I go and console log this, it will run for 2 times. So that is 1000 milliseconds, that is 1 second. Then it will run the second time, and then it should not run for the third time. But at this 300 millisecond mark, we are running clear interval. So let's just say this stops the interval. So now if I save this, it does say 1 2, this was fired from interval, this was, and this says this stops the interval. Okay. This is like your basic global object and how to use it. Now let's move on to getting data. So we still, apart from global object, we do have some small things we can work with. So two of them I will be showing you, which we'll be using a lot. So it is, one is the directory name. So you say dir name, and the other one is file name. So let's just console log this out. And if I say, now you guys can see this, right? See users desktop name, and my name is there. So this is the directory name, and this one is the file name that we are currently working in. So let's just close this for now. Okay. And let's talk about imports and exports. Now, generally, when you are working with, we use something known as package.json file. So this is your package.json file, and it will have it is a JSON file actually, and then it will have a command that says type module. Okay. So this is what we use, but on server side, we prefer using CommonJS, which is by default. So the CommonJS is the one which we are using right now. When we will learn with React and all, I will show you why we don't like to use CommonJS. But still on YouTube and all, if you see tutorials, sorry, we like to use CommonJS and not module. So there are workarounds with it, but CommonJS gets easier if you are writing an entire server only site. So let's just not do this for now and delete this file. We don't need this file, so we'll keep it as it is. So how we import is const other file equals to require other file name. Okay, so let's do this other file name. So for now, let's just create a file. It should say, let's say other file. So you can have this. And if we now go ahead and console log this, let me just type in. I use shortcuts a lot, so I don't think that helps you guys. And see, run this. It says other file not found. Okay,
Okay, okay. My bad. Okay, so returns just an object. So this is because we have not written anything over here. First of all, the second thing is we need to export something from this. So right now also, if I do const name equals to file name here, and then console log this name, or let's just console log some file name. This is the other file, and over here we will console log name. Okay, so why name is what? Name is the okay. We are not allowed to use name or something like that because name is a predefined variable. So now if I do this, you see this has been called. Now we need and the other file, when console log from here returns an empty object, we need to export something from here. So let's just export. We use modules.export. Let's see, we are supposed to use modules.export now, right? Okay, modules.export, and then say equals to name1. Okay, so now if still this won't work, we need to import something from here. What is the what modules is not defined? Modules is not defined. Why is modules not defined? Wait a second, guys. Let me just see what wrong am I doing. So module.export should work. Why is it not working? Module.export. Okay. So what is wrong? Okay, I guess yes, S was missing. I'm so sorry for this. So now we have this modules.exports, and then if we go, okay, still there is a mistake. Modules is not defined. Why is modules not defined? Okay, module is supposed to be no S. So you see file name here. This was the other file, and we have, and we get this not an empty object over here. So now while working with this, we can use this same to export multiple things. So let's just say I have another const name equals to we are not supposed to sum equals to then name. Now if we want to export both of them, we can just add export sum. Now since we can export only one thing, that is why we are putting this as an object. If you know, remember we talked about object looks like this and array looks like this. So we want to return objects, always objects, never return arrays. Okay, so now if I return this and console log this, it says name1 and then what is inside that object, and then sum, what contains inside that object. What if you want only one thing? Now this importing everything, let's just say I had a lots of things over here and I don't need everything of them. Importing everything from here will increase the size of this file only. So we don't want to do that. So what we do is import only the required thing. So this is called destructuring. So we can import sum and then name1. So now if we try to do this, it should throw an error for now. Other file is not defined because we just removed this. So what we do is we will console log this and this separately. Okay. Same is not sum. Okay, I'm spelling mistake. I'm sorry.
Okay, so this should work. So okay, now you see it name one and sum. Okay, so this was, we should, let's just remove this from here. It is confusing me. So this is how we import. You can also import it as something. Now last time I used the name other file. You can use any name over here, like your name itself. It does not matter. And then you can just say from your name dot someone, and then your name dot name one. So these are the two things that we are importing. Now what about functions? You want to export functions and import them over here. You can't just say this is a const function, and then let's say give it a name, hello function, and then it says mm, it does not take in any okay, let's just do a and b now. Okay, and then uh, okay, so it will return a plus b. So now if we do const add equals to hello, a will be 10 and 2 this will be, and then we can just do console log add. So we are now console logging this. Let's just stop console logging this, guys. And since this has been run, so we will get a 30 over here. Now I remember teaching you guys arrow functions. Am I right? I taught you guys arrow functions, right? Shiv, Muzammil, Lakshmi, Lavanya. I taught you guys arrow functions, right? Yes, sir. सर Yeah. सर So I would, yeah. आपकी बैकग्राउंड स्क्रीन नहीं आ रही है, अभी आ रही है? नहीं आ रही, इसमें फोटो आ रहा है बस। कैसे क्या फोटो आ रहा है? सिर्फ स्क्रीन दिख रही है? ये है एवरीवन इज विजिबल? क्रिकेटिंग Yes, sir. करते टाइम का फोटो आ रहा है सर। यू शुड हैव सेड ना। स्क्रीन दिख रही है शिव, मेरे दूसरे इस पर दिख रही है स्क्रीन मेरी बराबर। सर मुझे नहीं दिख रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे दिख रही है। लक्ष्मी, मुजम्मिल, इज द स्क्रीन विजिबल? आप एक बार Yes, लीव sir. करके वापस ज्वाइन करो, देखो। Yes, Okay, sir. sir. Visible. शिव एक बार लीव करके ज्वाइन करके देखो। यस सर, देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ सर। ओके। अच्छा मुजम्मिल, आपका आप प्रेजेंटेशन के साथ में रेडी हो? कराना सर। मैं स्टॉप कर दूं प्रेजेंटेशन? तब तक हम मुजम्मिल का आने का वेट करते हैं, ठीक है? करा था ना सर, क्या? बिगिनिंग में ही कर दिया ना सर, आप बोलते वक्त। नहीं, मैंने आपका प्रेजेंटेशन देखा नहीं। एंड में दिखाऊंगा सर। ओके चलो। एवरीबॉडी एल्स, I am expecting my screen to be visible. I am sharing it again. Was it not visible the entire time? सर अब आ चुकी है स्क्रीन। Okay. Lakshmi, Mariala, please tell me, was my screen visible the entire time when I was showing you guys? Visible, sir. It was visible, na? All the time I was showing you this. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So it was from Shiv's side only. Okay, Shiv, we did not learn anything major. We are still at the baby steps, so don't worry. I was just showing them how to import and export. Shiv, by the way, have you made your presentation portfolio? आपने बनाया आपका portfolio presentation? यस सर, बनाया है। अच्छा, अभी आप शो कर सकते हैं ना हमें?
सर इस समय मैं फोन में ये चला रहा हूँ क्योंकि मैं ना होम टाउन गया हुआ था, इसी वजह से अच्छा मैं तो जो हूँ लेट हूँ आज क्लास ज्वाइन करने में सर। हाँ ठीक है चलेगा। सर मैं आपको भेज सकता हूँ इसके बाद, ठीक है क्लास के बाद। चलो। ओके सर। वैसे भी मैंने कल पर डाला हूँ क्योंकि लावण्या को भी एक दिन चाहिए था और तो कल कर देंगे। आप फिर भी मेरे साथ में एक पर्सनल चैट में शेयर कर देना ठीक है। आपका और ओके मुजम्मिल का हो गया है, लावण्या और लक्ष्मी बाकी है। लक्ष्मी का थोड़ा इश्यू है तो समझ सकता हूँ। आप मुजम्मिल और लावण्या करना चाहिए ओके। ओके सर। चलो। फिलहाल मैं अभी बता रहा था कि हम इस फंक्शन को कैसे एडो फंक्शन करेंगे। मेरे को प्लीज कोई बता दो इसको अभी एडो फंक्शन में कैसा कन्वर्ट करूं। ये जो हमारा ऐड फंक्शन है जो अपने हेलो से दिखे है ठीक है, अपन इसे ऐड में ही रखते हैं फिलहाल। हाँ प्लीज मुझे बता दो इसको मुझे अभी एडो फंक्शन करना है तो मैं कैसे कर दूंगा। ऐड के बाद इज इक्वल टू डालना है। ओके ऐड के बाद इक्वल टू डालना है। और ये काम अभी ब्रैकेट्स के बाद आके पैट पैट और मतलब ब्रैकेट डाल के ग्रेटर देन सिंबल डालना है। ब्रैकेट डाल के नहीं नहीं नहीं, वही फिर ए काम बी के बाद हाँ इधर इक्वल ब्रैकेट डालो टू ब्रैकेट नहीं फिर इक्वल टू। ग्रेटर देन सिंबल। अच्छा अच्छा ग्रेटर देन सिंबल खाली। हाँ हाँ इज नहीं इक्वल टू डालना इज इक्वल टू। हाँ ओके और क्या चेंज करना है मुझे अभी। अभी इतना भी काफी है। इतना काफी नहीं है, यहाँ पर लाल एरो आ रहा है ये देखो। एक्सपेक्टेड बता रहा है कुछ वो। कांस्ट ऐड डालना है फंक्शन में, फंक्शन हटाना ओके चलो कॉन्स्ट ऐड इक्वल्स टू ठीक है। अभी ये एक ही लाइन है तो इसको और शॉर्ट कर सकते हैं अपन, कैसा शॉर्ट करेंगे इसको। रिटर्न हटा देना है। ओके रिटर्न हटा देना है। आगे अभी भी 3 लाइन का ये एक लाइन हो सकता है। ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स निकालना है। कौन से वाले। हेलो हाँ कौन कर्ली से वाले। ब्रेसेस कर्ली हाँ बेसिस और ऊपर नीचे जाना है सारा ये प्लेस भी। ठीक है चलो। रन होगा नहीं अभी। हाँ हो गया। चलो देखते हैं। गड़बड़ हो रही है। अच्छा अच्छा चलो मेरी मेरी मिस्टेक है ठीक है। ओके फिर भी नहीं आया, मैंने क्या मिस्टेक किया हो मुझे बता दो प्लीज। एडिशन करना है, एडिशन डालो। हाँ एडिशन डाल रहा हूँ मैं, चलो हाँ चलो इतना तो समझ में आ गया। ओके अगर मैं एडिशन नहीं यूज करता होता और यहाँ पर खाली ऐड यूज करता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे क्या डालूंगा। तो अभी भी ये मुझे खाली ऐसा बताएगा फंक्शन ऐड करके, तो क्या करना चाहिए मुझे। आर्गुमेंट्स पास करना जरूरी है। ओके चलो ये भी सही है। अच्छा अगर मैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास नहीं करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एरर आता है, ये देखो नॉट अ नंबर, तो मैं इसका कैसा हल कर सकता हूँ मैं। बी की वैल्यू असाइन करना है। बी को हाँ ठीक है चलो ये सही किया हूँ मैंने। हाँ सही। ओके चलो हो गया। आप rest of you also I expect you guys to answer my questions okay. So let's just export this function now. So tell me how can I export this function. Comma adds. Okay I will add a comma, then should I then I will put the function name. Is this right now? Okay let's just check if this is right. Okay chalo console log I have to register. Let's just import that one thing only. So we are importing add and
console log this. So it says undefined. Okay. You guys have got the function for now. Chalo. What am I doing wrong over here? The same thing Muzammil told me. So you guys do understand how to import and export. Okay, add is not a function. It gives me an error. Add is not a function. How do I do that? Hmm? Anybody? Any idea why? एक्सपोर्ट में डबल ब्रैकेट ब्रेसेस जी एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइन में एक्सपोर्ट ऐड की के लाइन बाद बराबर है। एक्सपोर्ट की लाइन बराबर है। वहां पर डबल ब्रेसेस डालो आप बोल रहे हैं। हाँ वो हो सकता है ऐसा। ठीक है, टेस्ट करते हैं। मुझे तो अभी फिलहाल सही दिख रहा है। वो क्या तकलीफ है इसको? हाँ ये देखो, ये नहीं, ये रॉन्ग है। कुछ और करना पड़ेगा हमें। कॉन्स्ट है equals to क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम? ये सही तो है, फिर भी रॉन्ग क्यों बता रहे हैं? ओके, चला चला, पहले कुछ तो शायद मिस्टेक हो गई देंगे। ठीक है, हाँ मैंने ये फाइल सेव नहीं किया था शायद से। ठीक है चलो, इतना हो गया। और क्या मुजम्मिल, अभी हम आपका प्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, आप आपकी स्क्रीन प्रेजेंट कर सकते हो। ओके सर 5 मिनट्स। मुजम्मिल आपकी स्क्रीन शेयर कर रहा अभी। मेरा हो गया स्क्रीन शेयर करके। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही था। मेरे को लगा सब लोग के प्रेजेंटेशन रेडी रहेंगे तो हम आई थॉट दैट एवरीबॉडीज प्रेजेंटेशन वुड बी रेडी, सो आई केप्ट इट शॉर्ट, आई प्लान्ड शॉर्ट. Let's just do Muzammil's presentation for the day and then I guess we will leave then. Muzammil, share your screen now. Huh? शेयरिंग सर। Yeah. Okay. Nice. Okay, good. Okay. इसके अंदर आपने बैकएंड यूज किया है क्या? खाली प्लेन एचटीएमएल और सीएसएस है? लेन सर। ओके, चलो अच्छी बात है। और अगर आप ऐसे ही कर रहे हो तो अच्छा है, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा ये देता हूँ, बताता हूँ। देखो, डबल आवाज क्यों आ रही है? मुजम्मिल, अगर आपने
अपने कोई एक्स्ट्रा ज्वाइन किए देंगे ना, तो उसको ये कर दो ना, या तो म्यूट कर दो या फिर उसका ऑडियो ऑफ कर दो। ओके, तो मुझे, नहीं नहीं, ऊपर के पेज पे जाओ, ऊपर पेज पे जाओ। ये आप देख रहे हो, ये रिएक्ट जेएस आपने जानबूझ के नीचे रखा है क्या? लाइन में होना चाहिए था वो। अच्छा ओके, आपने सब यूज किया, ठीक है चलो। और फिर बाद में मैं आपको बताऊं कि आपकी डिजाइन है ना बहुत क्लमजी लग रही है, क्लीन नहीं लग रही है। ये शेडोज अगर आप देख सकते हो आपके फोटो के अराउंड में है, बहुत डार्क है, थोड़े उन्हें लाइट कर दीजिए। और बाद में फिर ये फॉलो मी के ऊपर होवर करेंगे तो कुछ आता है, फॉलो मी के ऊपर। आई गेस ये आपने एंकर टैग यूज किया है, हाँ एंकर टैग यूज किया, उसको कलर नहीं दिया है। ठीक है चलो, नेक्स्ट पेज जाते हैं, नेक्स्ट पेज। आपका कोड भी अच्छा है, आप div यूज करते हैं। और स्टाइल डॉट सी एस एस बताओ। ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके आप फ्लेक्स बॉक्स भी जानते हैं, ठीक है चलो। आपने सीडीएन के अंदर क्या क्या यूज किया है? अच्छा, फॉन्ट ऑसम यूज किया है, ओके चलो, अच्छी बात है। अभी आपका कल का भी एक दिन है, तो इसके रिस्पॉन्सिव भी बना दीजिए, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं, डिजाइन तो फिर भी अच्छी है, गिवन आपके 3 डेज थे। ओके, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिव है, इतनी नहीं है। ये सब जैसे फॉलो मी के अंदर वो घुसा है आपका वो, ये सब एक के ऊपर एक स्टैक हो रहा है। ओके अच्छा चलो, ये सब रिस्पॉन्सिव के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, बहुत कुछ काम बाकी है इसका करने का। आपको डिप्लॉय करने आता है क्या? हाँ मुजम्मिल। Does anybody of you know how to deploy a website like that website I showed you? Can you stop sharing, Muzammil? I will show you like deploying. So let me just open one of my websites so you guys can see. So okay, now you guys can see my screen, right? Yes, sir. Right, sir. Yeah, I can see my screen. Uh, Now since I am on a free server, any cold start will take time. So I'm sorry for that. Okay, so this is my website which I made. You guys can now view this website over here. It has been, it was an idea, and that idea is now sold over here. So I guess they moved this website to WordPress also. Yes, this is now in WordPress also. So they did that. Chalo. So you see, I used Heroku to deploy my app. So if you go to heroku.com, I guess you will have to look up the documentation. This is the documentation for it. I will be teaching you guys how to deploy website, but if you can see, they allow you to deploy your own websites over here, and it is free. So please try that. Then we also have 000 web host. This is far easier method of deploying your website. All you have to do is sign in from here and then create an account. I don't have an account, I guess so. So once you get an account, all you have to do is copy and paste your files in here. And okay, we have this. Chalo. I hope it works.
You have to go to this 000webhost.com, create an account. Hey there, Mohib Davilkar. This is not my first rodeo. Okay, let's go through the steps for now. So learn web development, start a blog. Okay, how can you learn? We don't need this. Website name optional. Hmm, test web, then show password, generate password. Okay, let's just see. Okay, I did not save my password also. Chalo. I printed. Another website with this name already exists. Test web Mohib. Please don't keep this as your password. Anybody will be able to hack it. I'm just keeping it to show you guys. Okay. So now, okay, it is loading. Okay, website has been created. Upload your site. Yeah, you click over here and then they take you to this files.000.webhost.com, and then all you have to do is just upload your files over here. So in this folder, public HTML, you have to add your files. So let's just where is this upload files? Select files. Um, let's just upload this, the ones we made. So I guess this should work. Okay, uploading, and I have no idea if I'm doing this right. Let's see now, how do I access my website? Where is the link for my website now? Search, upload, refresh, compress. Okay, this is my home folder, test web Mohib. Where is it supposed to be? No, this is bad idea. This is bad idea. Okay, oops, looks like you have lost. Chalo, we are at manager. It should be something like test web mohib dot triple zero web host dot com. Nope. What will it be? Refresh icons. Chalo, I also have no idea. But anyways, if you want, you guys can try. Okay, so this is my website. Okay, chalo, I got it. So look, this is what we created using our this. So don't mind this logo because it is free. And if we see what was the last thing that we did over here, it should be there in console too. Yeah, see, can't fetch data, get data. This is what we did, and you have everything that we made over here. So this is how you will be hosting your this website. If you did not understand, don't worry. I really don't need you to do this, but it will be a bonus point for you. So you should go to webhost 000webhost.com and just copy paste your files. Unlike that, the other one that I showed you, Heroku, this requires a bit of skills to upload your website. So please don't try this now. If you want to, you can try it right now. But it's fine if you don't do it over here. You can choose, find something better than Zero Host 2. I have no problems with that. Okay. So that concludes our today's lesson. Shiv and Lavanya, please be ready with your website tomorrow. Otherwise, I will be very angry with you. And I won't let you inside lectures unless I see your website. Okay. So we सर don't want to do सर that. Okay, Shiv, yeah, say. सर मैं अभी
थोड़ा मतलब जानकारी लेना चाह रहा था कुछ, तो मैं प्रोजेक्ट शो कर सकता हूँ अपना? मैं इस समय पीसी पे हूँ। हाँ ठीक है, शो कर दो, चलो प्लीज। ओके सर, एक जस्ट मिनट सर। हाँ हाँ, no problem. Others, the session has ended. If you want to stop, you guys can wait for some time and see Shiv's work also. Else, you are allowed to leave. Okay. And tomorrow, please also watch about file streams and buffers. We will be doing that tomorrow. It will be inside Node.js only. So we are not at that point yet to start with the servers and all. चलो, ओके नाइस। नहीं, ये वाला नहीं। Shiv, I have muted you because there was lots of background noise. You can unmute yourself. Okay. Did you make this by yourself or have you used some template? नहीं सर, टेम्पलेट मैंने यूज नहीं की है, ये मैंने कोडिंग से बनाया है। और इसकी Okay. मतलब मैंने जो टेम्पलेट है कुछ इसका वो मैंने यूट्यूब से वीडियो देख करके कुछ मैंने इसके पार्ट सीखे हैं सर। ओके ओके, चलो अच्छी बात है, बनाया है वही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी यस मच। नो प्रॉब्लम। आपका कोड देख सकता हूँ मैं? यस सर। ये आपने खुद से डिजाइन नहीं किया ना? राइट क्लिक ओपन विद वीएस कोड। यस राइट क्लिक, नहीं नहीं, कहीं पर भी नहीं नहीं नहीं, कहीं पर भी राइट क्लिक करके ओपन विद वीएस कोड कर दो। हाँ, किसी फोल्डर पे मत करो। चलो, आपने वैसा क्या करो, चलो। शिव, मैं पहले आपको क्या बोला था, वहीं पर राइट क्लिक करके ओपन विद वीएस कोड करना था ना? जी ठीक है, सर। चलो अभी इसको बड़ा करो, मैं आपको कल बताता हूँ। ठीक है, हमें अभी तक वीएस ओके कोड का भी अब लोग थोड़ा बहुत बताना है मुझे। ओके सर। नहीं नहीं, आपके वो प्रोजेक्ट सीवी देखो नीचे आई है। हाँ, ये जी अभी वो खाली स्टाइल डॉट सी एस एस और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये दो ही फाइल बताओ और कुछ नहीं देखना। जी सर। ओके, ठीक है, आपका कोड भी क्लीन है, अच्छा है। चलो, स्टाइल डॉट सी एस सर। हाँ, स्टाइल डॉट सी एस एस भी बता दो, आपने जी क्या क्या यूज सर। किया उसमें देखने दो। ओके, इंपोर्ट है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। आपको फ्लेक्स बॉक्स आता है शिव? यस सर, कुछ आता है सर, कुछ पार्ट्स आते हैं, जैसे मतलब फ्लैक्स वॉच यूज करके टेक्स्ट को इधर उधर करना, मतलब जो है ओके, थोड़ा समझा। बहुत आता है, मतलब इतना नहीं आता है। ओके गुड, नो प्रॉब्लम। इस कोर्स के साथ में हमें इतना सी एस एस वाली जरूरत नहीं है। जब हम रिएक्ट यूज करेंगे तभी बेसिक सी एस एस लगेगा। और जी जो सर। हम नोड जेएस के अंदर जब सर्वर के साथ में जब रेंडर्स बनाएंगे ना,
तभी जी। आपको बेसिक CSS लगेगा। ऐसा फ्लेक्स बॉक्स वगैरह हम कुछ नहीं यूज करने वाले, सो इट विल बी जी। वेरी इजी फॉर अस। ओके, डोंट वरी ओके अबाउट सर। दैट। या ओके सर। ओके, और चलो। कुछ? नो नो, थैंक यू। नथिंग एल्स। चलो, okay, so that's it for the day. Good job, Muzammil and Shiv. Both of your work was nice. So that wraps our meeting now. See you tomorrow. Stay safe. Go on outside only if necessary. Okay, थैंक यू सर। no problem. Chalo, bye. बाय सर, गुड इवनिंग सर।